Well, in this video, we will talk about improper integrals. अच्छा well, previous lesson में हमने देखा what are definite integrals. An integral of form integral a to b f of x dx is called a definite integral, where a and b are its limit, a is lower limit and b is upper limit. Well, अब अगर हमारे पास एक ऐसा डेफिनेट इंटेग्रल हो जिसमें वन ऑफ दीज लिमिट्स a और b infinity हो जाए, undefined हो जाए, तो then this definite integral is an improper integral. बेसिकली हम दो टाइप के यहाँ पे improper integrals डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट टाइप ये हमारे पास कि वन ऑफ लिमिट्स अपर या लोअर लिमिट जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, लाइक एन इंटेग्रल ऑफ फॉर्म इंटेग्रल a to infinity f of x dx, या फिर एन इंटेग्रल ऑफ फॉर्म माइनस इन्फिनिटी टू से b f of x dx. So these type of integrals are called improper integrals. Now, अब क्वेश्चन ये है कि how can we find values of these improper integrals? अब सिंपल हमने क्या करना है, टू इवेल्यूएट दिस improper integral a to infinity f of x dx, हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है बाय दिस इन्फिनिट लिमिट इन्फिनिटी बाय अ लेटर x. ये लेटर हमारे पास हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, इट कैन बी t, इट कैन बी u, etc. So first thing is we will rewrite the given improper integral by replacing infinity by a letter. Okay, or then we will define the limit, we will apply the limit, the letter x जो हमने introduce करवाया है approach to infinity provided the limit exist. अच्छा, okay, well, so first thing is to replace that undefined limit by a letter and then apply the limit on that letter. Say if the limit is infinity, write t approaches to infinity. If the limit is minus infinity, write t approaches to minus infinity. अच्छा, फर्दर कुछ रिजल्ट्स फॉर AS लेवल्स जो हमने याद रखने टू इंटीग्रेट दीज टाइप ऑफ इंटेग्रल्स. फर्स्ट थिंग जो हमने याद रखनी है वो ये कि हमें पता है कि व्हेन x अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर हम x की वैल्यू क्लोजर एंड क्लोजर टू ज़ीरो लेते जाएं तो देन जो 1/x है हमारे पास दैट विल बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत लार्ज होता जाता है डिनोटेड बाय इन्फिनिटी. तो x approaches to 0, 1/x approaches to infinity, and when x approaches to infinity और x approaches to minus infinity, तो then जो हमारे पास 1/x है that will approach to 0. तो ये बहुत important concept है to find values of improper integrals. When x approaches to infinity or negative infinity, 1/x will approach to 0. या इन अदर वर्ड्स आप ये याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास 1/x होगा, if we replace x by infinity or negative infinity, then this expression will approach to 0. तो ये की concept है to find values of improper integrals. Otherwise जो working for improper integrals है that's totally same as for definite integrals. Well, example. So show that the improper integral as a finite value and find this value. तो दो चीज़ें बेसिकली उसमें आप उसने डिमांड की हैं. द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू शो दैट दिस इंटेग्रल एज अ डेफिनेट वैल्यू, अ फाइनाइट वैल्यू, और सेकेंडली फिर हमने वो वैल्यू फाइंड भी करनी है. सो वेल, तो जो मेथड है हमारे पास जो हमने अभी डिस्क्राइब किया, हमने डिफाइन किया, वो ये कि फर्स्ट वी विल रिप्लेस दैट इन्फिनिट लिमिट बाय अ लेटर से t. So this can be written as limits 1 to t 1/x squared dx, और साथ हमने फिर डिफाइन कर देना है कि where the letter t approaches to infinity. Okay, well, now we will integrate this expression just like definite integrals. तो पहले तो हमारे पास जो integrand is not in integrable form, तो हम इसे लिखेंगे 1 to t x raised to the power minus 2 dx. Now apply power rule of integration. Add 1 in power, divide by resulting power, and write limit like this, limits 1 to t. Okay, well, so this is equals to minus 1/x with the limits from 1 to t. Now apply limits. Upper limit apply करेंगे and then lower limit. By applying upper limit, this is minus 1/t minus lower limit, replace x by 1 minus 1, which is equals to minus 1/t
माइनस माइनस प्लस 1. नाउ अप्लाई द लिमिट्स. जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे as t approaches to infinity, तो अभी हमने डिफाइन की थी प्रॉपर्टी कि when t approaches to infinity 1 over t approaches to 0. As t approaches to infinity 1 over t approaches to 0, so this integral 1 to infinity 1 over x squared dx becomes equals to 1 over t 0 plus 1 equals to 1. So yes, the given integral has a finite value which is 1. Well, second type of improper integrals जो हमारे AS syllabus का part है. In previous type हमने देखा कि one of the limit must be undefined, must be infinity. Now जो second type है उसमें हमारे पास both the limits will be definite numbers, will be finite, but the जो integrand है, जो function to be integrated है, is not defined at one of these limits. तो अगर हमारा function not defined होगा at one of these limits, so then these type of integrals are also called improper integrals. ओके वेल, तो सेकेंड टाइप में हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड नहीं होगा एट वन ऑफ लिमिट्स. फॉर एग्जांपल सपोज अगर हमारे पास फंक्शन है 1 2 3 1 ओवर एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो अगर हम यहाँ पे x को 1 से रिप्लेस करें तो इट बिकम्स 1 ओवर 1 माइनस 1 मीन्स 1 ओवर 0 infinity. So this function 1 over x minus 1 is not defined at x equals to 1. So this is an improper integral. याद रखना, we cannot integrate improper integrals like definite integrals, proper definite integrals, because here 1 is a problematic limit. अगर हम इंटीग्रेट कर भी देंगे तो 1 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. Similarly, like limit from minus 3 to 0 1 over x cube dx, this integral is not defined at 0 क्योंकि 1 over 0 infinity हो जाएगा. So this is another example of improper integral. So we cannot integrate this function just like proper definite integrals. So these are improper integrals of second type. अच्छा well, so किस तरह इंटीग्रेट करेंगे? We can integrate integral of this form where f of x is not defined at x equals to a. अगर लोअर लिमिट पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, f of x डिफाइन नहीं होगा, तो then we can integrate it by replacing the lower limit a by a letter say x and then taking the limit x approaches to a. अच्छा well, if the function is not defined at upper limit x equals to b, then we will replace that upper limit by a letter and apply the limits x approaches to b. Example, find the value if it exists of 0 to 2 5 or x square. तो जब हमें definite integral का question आएगा तो we have to make sure that the function is defined, this integrand is defined for all values in the domain in the interval. If function is not defined at any one of the limits or a number in between the limits, then we will use the technique of improper integrals to integrate that definite integral. अच्छा well, in this case अगर हम x को replace करें by 0 तो 5 over 0 is infinity, so this function is not defined at x equals to 0. So it means the lower limit is problematic limit. So we will replace lower limit by a letter say t. So this integral 0 to 2 5 over x square dx can be written integral. पहला स्टेप क्या है? We will replace problematic limit by another letter say t 5 over x square dx और साथ t पे लिमिट अप्लाई कर देंगे where t approaches to 0. Okay well, so this is equals to, now we will integrate just like definite integrals. तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो सिंस द इंटीग्रेंड इज नॉट इन इंटीग्रेबल फॉर्म, तो पहले हम इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. दिस कैन बी रिटन 5x power minus 2 dx. नाउ integrating 5 is a constant, apply power rule on x power minus 2, add 1 in power, divide by resulting power and write limits like this, limit from t to 2. Okay well, so the next step is simplifying this expression 5 x raised to the power minus 1 divided by minus 1 with limits from
t to 2. Okay, well, so this is equals to minus 5 divided by x with limits from t to 2. Now apply limits just like definite integrals. Applying upper limits is 5 minus 5 over 2 minus lower limit minus 5 over t. So this is equivalent to minus 5 over 2 plus 5 over t. Okay, well, now when t approaches to 0, 5 over t, because the denominator is 0, so 5 over t will approaches to infinity. T approaches to 0, this limit, so then 5 over t approaches to infinity, because 5 over 0 is infinity. So we conclude that, so the integral 0 to 2 5 over x square dx is undefined. So this definite integral is undefined. अच्छा, अगर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, तो हम उसे कहेंगे द इंटीग्रल इज अ कन्वर्जेंट इंटीग्रल. और अगर इनडेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, लाइक इन दिस केस अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, तो देन दैट इंटीग्रल इज सेड टू बी a divergent integral, yeah, non-convergent integral. Yeah, we can state that this integral is not convergent.